दिस इज़ कॉलेज रियलिटी पार्ट 2. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट एंड अगर आपको देखना है पहला पार्ट तो यू कैन गो वॉच दैट, वरना आप इधर से शुरू कर सकते हो. एन्जॉय. नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज कि मतलब कि आप कितने सोशली एक्टिव हो जाओगे. आई मीन यू विल बी बोर्ड, यू नो, इट वोंट बी ऐसे बढ़िया 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 एकदम सब कुछ बढ़िया ऑल द टाइम. देर विल बी बोरिंग मोमेंट्स, देर विल बी मोमेंट्स where you want to go home, where you're tired, and there will be moments where you do not want to go home. You're having fun, you're talking to friends, you're interacting with people, you're indulging in better experiences where you're part of events. Like one thing which I really liked about my college life until now is that I have been a part of 2 events abhi tak, and I never thought in my school life ki college mein I would be a part of events itna closely, where you get to see how you get sponsors, you get things prepared for the event, everything, like every minute detail, how you take care of it and how responsible you have to be ताकि आप एक इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज कर सको एट अ कॉलेज का लेवल. आई मीन, so that is something, that experience which I gained, I really am very happy and very grateful about it, because that is something which I really enjoyed as a person who is like very into managing things and like, you know, all these things where you have to like take care of so many things at a time, where you have to be prompt with everything that you're doing. So I really enjoyed that experience. So definitely one thing I would advise you and one thing I would like to discuss is that definitely put yourself out there and just fill out forms, fill out Google forms, and you never know where you're gonna like get an opportunity where you'll get to be a part of an event or just anything, you know, related to what you want to do. Basically, like these experiences I feel are one of the core memories you will have from college, that oh, I was a part of this event, I talked to these seniors, I interacted with these people. So that I feel that exposure is only then, it is only available when you like give yourself that exposure, when you are ready to just throw yourself into like every opportunity that comes and goes. Like you have to be ready, like you have to follow Insta pages, you have to be prepared कि क्या गूगल फॉर्म्स आ रहे हैं, क्या इवेंट है कॉलेज में, क्या चल रहा है, so that you can enroll yourself. Like I said, there's no one who's gonna dictate कि ओ बेटा ये फॉर्म्स आ गए हैं भर दो. No one's gonna do that. So you have to follow the Insta pages of various societies, you have to look out for things, and of course if you're gonna look for things you'll definitely find things, and you enroll yourself and just be ready for new experiences is something I would definitely say. If you want to enhance your college life, college में अटक के you won't do anything much इतना अच्छे scale का, but if you go out and if you see the opportunities, then you will definitely enjoy what you're doing. So I would definitely advise you to just enroll for things, because ऐसी opportunities definitely आपको स्कूल में नहीं मिली होंगी, and when you do these things in college तो आपको actually realize होगा कि how you have to be like responsible and how big of an impact what you do makes to like big things. So if you realize that, then you'll, you know, the essence of growing up is also one of, you know, just things like where you have to be responsible, और ताकि आपको realize हो कि yeah, everything is very important and how to manage those things. So I feel yeah, that is definitely a huge part of adulting, I would say, or just like understanding things, how they work in the world, and how to talk to people, how to approach, for example, sponsors and everything. So it is a really great experience. I would definitely advise you to just put yourself out and be a part of societies, because societies के events होते हैं mostly. So yeah, definitely do that. That is a major part of college life. Anyone you ask, they will tell you that societies ही college life का main part है, क्योंकि cross colleges भी you'll find more people, more views you will share, more new things you will get to learn. So that is what I feel college life will at the end be about, definitely. So college basically अपने floor, अपने लोग, अपने उसमें मत अटके रहना, अपनी इन opportunities का फ़ायदा ज़रूर उठाना. मतलब पहले से, अगर अब जैसे ये वीडियो देख के तो पहले से पता हो
you have to be active in finding out opportunities, and you will be like definitely अब आगे हो गए बाकी लोगों से, तो इसलिए सब्सक्राइब, मतलब you'll get exclusive stuff where things you should know, so like subscribe. बाकी I feel many people who are indulging in like sports और जिनको उसमें इंटरेस्ट है, then there are more opportunities sports में भी, like cross college competitions, training and everything, so that is more in colleges I would say than in schools. At least Delhi में जितने मैंने देखे हैं, काफ़ी schools में opportunities होंगी, बट जैसे मेरे स्कूल के हिसाब से और मेरे और लोग जिन मैंने देखे हैं उनके हिसाब से कॉलेज में ज़्यादा स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती है. सो वन थिंग इज़ ऑल्सो दैट कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, इवन इफ़ यू नॉट प्लेड पहले. बट आई फील कॉलेज में होने के, स्पोर्ट्स में होने के लिए यू शुड हैव थोड़ा एक्सपीरियंस, सो दैट यू कैन गेट थ्रू द इंटरव्यू राउंड्स, क्योंकि उसके भी लाइक इंटरव्यू उनसे ट्रायल्स होते हैं. तो हाँ, तो यू कैन ट्राई दैट डेफिनेटली अगर आप करना चाहो तो. उसमें भी काफ़ी अच्छा एक कॉलेज में स्पोर्ट्स का वो होता है सिस्टम. सो या आई फील दिस इज़ एवरीथिंग विच लाइक यू वुड एक्सपेक्ट एंड यू वुड थिंक ऑफ कॉलेज के बारे में. एंड इफ एनीथिंग इज लाइक something I missed out in this video, then you can definitely comment down below. Like this is all that I thought when I was expecting to go to college, and these are the things which I anticipated. And college की पढ़ाई I would say इतना भी ऐसे अलग कुछ नहीं है स्कूल से. You just have to be disciplined, you have to study well before the exams and everything, and you will get through it. There's no big deal about that. Especially if you're interested in the subject that you're pursuing, then it is even better that you will get to learn more practical things. India में ज़्यादा practical होता नहीं है, but yeah, you will get to learn more definitely. And you'll be around lecturers who have done like PhD and everything, so it'll be great, it'll be amazing, and I wish you all the best for your college life, for your upcoming college life. डरना नहीं है on the first day of the orientation and everything. Do not get scared or anxious. I know it is a very common feeling. मैं personally मेरे को नहीं डर लगा था, because I was just like कॉलेज में आ गए हैं, अब जो भी करना है, लाइक आई हैव टू बी काम अबाउट इट. मतलब एंक्शियस होके, मतलब आई वुड जस्ट मेस थिंग्स अप एंड एवरीथिंग. ऑफ कोर्स समटाइम्स यू कांट कंट्रोल इट, एंड मेनी टाइम्स यू विल फील लाइक द जर्क्स एंड एवरीथिंग कि ओ शिट कॉलेज आ गए पहला दिन ऐसे. दैट इज़ वेरी नॉर्मल, सबके साथ ही हो रहा है. डोंट थिंक यू आर द ओनली पर्सन फीलिंग दैट वे. सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग के लिए न्यू एक्सपीरियंस है, अनलेस कोई फेल होके बैठा हो. मतलब यही सोचो कि सब तुम्हारी तरह माइंडसेट के हैं, सबकी फटी पड़ी है, सब लोग डरे हुए हैं नए एक्सपीरियंस को लेके. तो यू आर इन द सेम बोट मैन. you'll either drown together, you'll either float together, everything you're gonna do together. तो चिल रहो, मतलब ये मत समझो कि मेरी इतनी फटी हुई है, ये वो सबकी फटी हुई है, मतलब चिल मारो थोड़ा. And yeah, even if you're anxious on the first day, no problem. If you've not talked to anyone on the first day, no problem. सेकेंड डे में ना बात करो, कोई दिक्कत नहीं. एक हफ्ता बात ना करो, कोई दिक्कत नहीं. एक साल मत करो, कोई दिक्कत नहीं. बट समथिंग विल वर्क आउट फॉर यू इन योर फेवर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. लाइक दैट्स ऑल आई कैन डू, एंड दैट्स ऑल आई हैव डन पहले भी चैनल पे. सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सब्सक्राइब. ओके, सो इन दिस सेक्शन आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द रैगिंग वाली एक्सपेक्टेशन एकदम आराम से. सो everyone, I mean a lot of people were wondering कि रैगिंग होती है या नहीं होती. तो आई जस्ट थोड़ा सा रीअश्योर करने के लिए, रैगिंग अब नहीं होती है, उसकी टेंशन लेने की कोई दिक्कत है नहीं, तो उसमें टेंशन मत लो. हाँ, दैट डजंट मीन कि सीनियर्स आपसे रूड नहीं होंगे, वो तो मतलब पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है. उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि सीनियर्स रूड है, वो तो कोई भी आपके साथ रूड हो सकता है. बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है रैगिंग को लेकर, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड रैगिंग इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, तो आपको एक क्राइम की तरह बेसिकली, तो उसी की तरह हो तो कुछ भी सकता है, बट अब नहीं होता कुछ, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, एंड या ऑल द बेस्ट. एंड if you would like to ask anything, then you can drop it in the comment box below, and if you want to subscribe, then you can subscribe to the channel.
I hope you have a great college life, and I hope you have ease in deciding आपका college, and you get a good college, you get a good course, the course you want. And so yeah, all the best, and I'll see you in the next video. Bye bye. So yeah, I feel I've covered everything which I wanted to say and which I thought of like talking about. And as I said, if you have missed anything, then you can definitely comment down below and I'll cover it in another video. Thanks for watching this video, and please subscribe to my channel, like this video, and turn on the bell notifications to get notified every time I post a new video. And that's it for this video. If you want to check out my older videos, you can do that because they're amazing. And I'll catch you in the next video. Bye, take care, and if you have any questions, you can write them in the comment box below. Bye, take care.